अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम एक नई तरह की डिश बनाने जा रहे हैं विच इज़ अ यूनिक डिश। आज हम बना रहे हैं चिकन ड्रम स्टिक्स। ऑलराइट, यहाँ पर हमारे पास चिकन है 500 ग्राम्स। ये हमने लॉलीपॉप जो लेग पीस होता है उसकी शेप में लिया है। ऑलराइट, और इसकी स्किन हमने उतार दी थी। और यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं हमारे मसाले। दिस इज़ हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून सॉल्ट एंड पेपरिका पाउडर 1/2 टेबल स्पून। और यहाँ पर इसके साथ हम मैरिनेशन करेंगे और एग और कॉर्नफ्लेक्स के साथ हम इसकी कवरिंग करेंगे। ऑलराइट, अब हम इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। और इस प्रोसीजर में आज माय यंग शेफ Zainab will help me. Zainab, first add the black pepper. Alright, and then we will add in the salt. Now paprika powder. Okay, now we're gonna mix this up and then let it cool for about 15 minutes. You can minimum 15 minutes, but you can keep it as long as you can. And if you want to keep it for more, if you have guests coming and the next day, so you can marinate this and cover it and keep it one day before, so it will be easier for you to fry it at the time when you want to serve. Alright, this is gonna be a very, very spicy recipe. और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे ड्रम स्टिक्स रेडी हो गए हैं बहुत अच्छी तरह से। ये वाला साइड हमने इन ड्रम स्टिक्स को एयर फ्राई किया है और ये फ्रायर में ऑयल में कुक करा है हमने। Hope you guys like this video. Don't forget to like, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the like button, and have a nice day. Bye bye.